हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक माइनक्राफ्ट का स्पीड रन 2024 में, जिसमें एक बंदा है ड्रिप नाम का, उसने माइनक्राफ्ट को बीट किया इन अंडर 7 मिनट्स। उसको सिर्फ 7 मिनट्स और 1 सेकंड लगा माइनक्राफ्ट को कंप्लीट बीट करने में। हम लोग उसी की स्पीड रन का एक वीडियो देखने वाले, एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। ये वाला वीडियो द वीकली थिंक के चैनल पे तुम लोग को इधर दिख जाएगा, एज वेल एज जो मेन स्पीड रनर उसका भी चैनल दिख रहा है। दोनों का भी चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो तुम लोग। और अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जाके अभी कर लो, बिकॉज 7 मिनट्स में बीट किया है। चलो चेकआउट करते हैं, लेट्स गो। Minecraft was just beaten in 7 minutes and 1 7 second minutes. by Drip120, beating No Fear's 7-minute 24-second world record that was set less than a month ago. ओके, We haven't seen world हाँ records हाँ, set मैं कोई this चीज बता close रहा था to each other. तुम लोग को लग रहा रहेगा लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड कब सेट हुआ है, जस्ट 1 महीने पहले, और उसके पहले का रिकॉर्ड 1 साल पहले का था। इमेजिन दिस, जस्ट 1 महीने पहले बीट किया एंड देन 1 महीने बाद ड्रिप नाम के बंदे ने उसको बीट कर दिया रिकॉर्ड को। In almost 3 years. And for one of the most popular categories in any game in speedrunning Minecraft history, speedrunning is one the of the sudden most popular explosion ever. of runs, threatening and even beating the world record is a huge development. This run is very well played, incredibly lucky, and uses an illegal mod? Rejected from the official leaderboard? Well, we'll get जो into the माइनक्राफ्ट का एक controversy. ऑफिशियल लीडर बोर्ड होता है speedrun.com पे, उधर से उसको रिजेक्ट कर दिया फॉर सम रीजन। तुम लोग को पता चलेगा वीडियो में, मुझे पता है ये थोड़ा कंट्रोवर्सी के बारे में। Surrounding the run later in the video. The most important Okay, thing हम लोग is बाद में that this देखेंगे। run is freakishly fast, almost breaking the 7-minute barrier, something we used to not सच्ची be में। sure was going to ever happen. So prepare yourself to witness one of the most shocking पहले and तो I'm incredible super runs. fascinated by Minecraft speed running. It is like a skill जो अपने को सीखना पड़ता है, बिकॉज हर एक चीज प्रिसाइज होनी चाहिए। एक भी सेकंड का डिले, एक भी सेकंड का मिस्टेक, क्राफ्टिंग में मिस्टेक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं पेनफुल हो सकता है अपने पूरे स्पीड रन के लिए। In speedrunning history, as we get into the story of Drip120's ड्रिप 7 120 पूरा नाम है उसका। The man behind the run, Drip120, doesn't look like your Romania. average Minecraft world record holder. Don't get me wrong, he's an extremely skilled and accomplished runner. He's the former Duo's world record holder for Random Seed Glitchless, a former top 25 player in Minecraft speedrunning ranked, and he's got multiple sub 7-minute end enters. वही But देखो, मैं इतना बता देना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छा स्पीड रनर था, बट वो जो भी स्पीड रन करता था, इट वाज नॉट एन ऑफिशियल स्पीड रन। मतलब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, स्पीड रनिंग में बेसिकली 2 कैटेगरीज होता है। तुम लोग नॉर्मली स्पीड रन कर सकते हो कौन से भी रैंडम सीड पे, या फिर दूसरा रहता है एक वर्सेस स्पीड रनिंग। आई गेस ड्रिप 120 वो करता था। इसका मतलब दोनों को सेम वर्ल्ड में डालेंगे, और दोनों में से जिसने एंडर ड्रैगन को पहले हराया, मतलब गेम पहले बीट किया, वो जीत गया। एंड आई गेस वो स्पीड रनिंग ऐसे ही ट्राई कर रहा था एक लाइव स्ट्रीम में, और फिर उससे ये वाला स्पीड रनिंग का हुआ। चलो वीडियो को आगे देखते हैं। his personal best before the world record was 9 minutes and 55 seconds. A far उसका cry personal best? from the world record उसका पर्सनल बेस्ट 9 मिनट 55 का था। he beat. हम लोग स्पीड रन And भी देखेंगे, more टेंशन मत लो, हम लोग importantly, से थोड़ा स्टोरी और he wasn't कंटेक्स्ट समझ really रहे हैं। going for the record when he pulled this run off. वही। When Minecraft speedrunners play random seeds, they can be Okay. more or less exclusive. तुम and लोग के लिए reset बहुत their कुछ हो run. रहा है स्क्रीन पे। तुम लोग अभी देख सकते हो 20 वर्ल्ड खुला है, तुम लोग को ऐसा लग रहा रहेगा, बट स्पीड रनर्स जानबूझ के ये करते हैं। स्पीड रनर्स पता है क्या करते हैं, उन लोग एक बीच बायोम ढूंढते हैं। बीच बायोम मतलब एकदम एज पे ढूंढते हैं, जैसे तुम लोग को इधर बीच में दिख रहा रहेगा। ओके, बीच बीच जो भी क्या हो गया, जस्ट एग्जैक्ट सेंटर में तुम लोग को एक बीच बायोम दिख रहा है। वो हो सकता है अच्छा हो, बट उसमें भी बहुत सारी चीजें रहते हैं। जैसे तुम लोग को एक पाई चार्ट दिख रहा होगा हर एक, इसमें वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उससे पता चलता है ट्रेजर चेस्ट कहाँ है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉन, ट्रेजर चेस्ट ढूंढना मतलब। According to Drip120, not only was he not resetting for the world record, he didn't even think he really had a chance to get it. For comparison, खेलते-खेलते the उसको average लग रहा था ऐसा। Minecraft- But the beauty of Minecraft random seed speedrunning that really doesn't exist in any speed game that's nearly as optimized as Minecraft is that it's chaotic, random. And anyone who puts in the time कुछ and भी हो सकता है ना, resources किधर भी अगर can स्पॉन have a नहीं हुआ, shot पोर्टल at गलत getting जगह पे this. बना दिया। And on January 3rd, 2024, Drip got his. ओके ओके, Familiar or अभी वो hasn't क्या won- बोलना चाह रहा है, वो अभी हम लोग को एक मेटा समझाएगा कि हम लोग गेम एक्चुअल में कैसे बीट कर सकते हैं स्पीड रनिंग केस में। चलो हम लोग पहले वो देखेंगे। Basic meta of a modern 1.16 run. मैंने तुम लोगों को looks जैसा like बोला था, this. बीच बायोम The runner जैसा। spawns in, acquires wood, tools, and preferably food, and वो finds a hitboxes nether on रखा है entry बस। via an underwater magma ravine, a lava pool, हाँ हाँ, or मैं तुम लोग एक और चीज समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तुम लोग ने समझ लो, अगर हम लोग को बड़ी ट्रेजर जैसा कुछ मिल गया, बेस्ट। जैसे हम लोगों ने ट्रेजर को माइन किया, आयरन ले लिया, अंदर का आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्ली स्टेजेस में। देन हम लोगों ने जैसे आयरन ले लिया, जिधर भी नीचे वाटर वाले केव्स में मैग्मा होता है, हम लोग को उधर जाना है। उधर हम लोग सिंपली पोर्टल बना सकते हैं। कुछ तो एक ट्रिक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो हम लोग को सीखना पड़ता है। एंड देन हम लोग डायरेक्ट नेदर में होंगे, बिकॉज हम लोग का मेन गोल ही नेदर से चालू होता है। बिकॉज हम लोग को ब्लेज रॉड लेने का रहता है, देन हम लोग को बैशन में जाके एंडर पर्ल लेने का रहता है, एंड देन हम लोग को फिर वापस आना है, एंड में जाना है, एंड देन हम लोग एंडर ड्रैगन को मारना है इन अंडर 7 मिनट्स। portal. In the nether, they'll need a bastion,
where they can collect copious amounts of gold and trade it Gold, with हाँ. copious amounts of pigment to acquire copious amounts of ender pearls, Ender pearl, obsidian, okay. and materials to make explosives. Obsidian भी चाहिए रहता Then है. they'll need a nether fortress, where they'll kill blazes to acquire blaze तो तुम लोग का rods and सीड craft उतना their ज्यादा ender रेयर pearls होना and चाहिए blaze कि तुम rods लोग को into दोनों eyes of भी ender. मिले. They re-enter the overworld and throw an eye of ender, हाँ. which will indicate the location of ओके the stronghold. ये जो भी हो रहा है तुम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो. आई नो बिकॉज दिस इज एक्चुअली सुपर कंफ्यूजिंग. They तुम लोग then स्क्रीन travel देख सकते हो क्या हो रहा है. back through the nether, where one block is equivalent to 8 in the 8 overworld. blocks, हाँ. Build a new nether portal and travel back to the overworld. एट दिस पॉइंट तुम लोग को होप करने का रहता है कि होपफुली मैं एंड में ही स्पॉन हूं बिकॉज ये वाला पोर्टल एकदम कैलकुलेटेड बनाया है. Where if everything goes right, they'll be right inside the stronghold. देख रहे हो तुम They लोग find the डायरेक्ट end स्ट्रॉन्गहोल्ड में portal उन लोग. room, fill the end portal with their eyes of ender, then go to the end and use their explosives to kill the dragon, using either a setup called the one हाँ, cycle set of bed or तुम लोग use another कर सकते हो. called the This is way zero too easy. cycle. Drip spawns next to a beach. चलो अभी हम लोग चालू कर रहे हैं ड्रिप के स्पीड रन से. दिस इज द ऑफिशियल स्पीड रन. 7 मिनट तक चलेगा. लेट्स गो. आई एम एक्साइटेड. Which is how most playable world record seeds start nowadays. The previous world record by No Fear also started on a beach. हाँ ये साइलोनॉक्स है. इसका भी आई गेस 1 साल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था. ये देखो बड़ी ट्रेजर. First, they load seeds in several instances of Minecraft using the wall, and are able to see the worlds generate as they load thanks to a legal mod called World Preview. और ये सब लीगल मॉड्स हैं. ये सब तुम लोग कौन सा भी लगा सकते हो. हम लोग से मल्टीपल वर्ल्ड्स को एक साथ लोड कर रहे हैं कि हम लोग को एक अच्छा वर्ल्ड का स्टार्ट मिले. That's it. Once they see a seed they like, a beach biome, उन लोग उस पे क्लिक कर सकते हैं. हाँ ये देखो. ये पाई चार्ट यूज कर सकते हैं लोग. nearby before they even dig a single block of sand. Since a chest is a block entity, उन लोग को it will directly show मिल up on जाता the है. F3 screen pie chart if it's within the player's field of view. And by narrowing the game window and reducing their render distance, they can determine the exact 16 by 16 block area or chunk the chest is in. Though there's only तुम लोगों ने देखा वो पाई चार्ट से उन लोग सिर्फ चंक को लोकेट कर सकते हैं. और जैसे चंक को लोकेट कर लिया तुम लोग को वो 9 और 9 का तो पता ही है ट्रिक. तो इन लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं हर एक चीज में. roughly a 1 in 100 और ऐसे बहुत सारे chance for a मॉड्स हैं. हम buried लोग बाद treasure में to डिस्कस generate in करेंगे a ये बारे beach में. biome. With world record times closing in on 7 minutes, it's worth the high number of resets because top level runners simply don't have time to waste in the overworld. Drip's pie chart indicates that there's a chest here, and since buried treasure always generates in the 4-4 coordinates of the chunk it's in, Drip knows exactly where वो to देखो dig. ड्रिप को समझ गया Treasure डायरेक्टली. generating वो underwater 9 पे means गया that रहेगा it takes एग्जैक्ट. 5 times as और जैसे long उसको to मिला find blocks और around it बहुत as सारे it would ट्रिक on होते हैं. land, बहुत सारे which is a माइनक्राफ्ट small के time लीगल loss. ग्लिचेस But है since ऐसा the सब gravel कुछ. block drops flint, which has just a 10% chance of happening and is needed to light the nether portal. वाओ. Drip उसको gets तुम लोग को समझा. हम लोग को नेदर पोर्टल बाद में जाके लाइट अप करना है राइट. हम लोग को फ्लिंट चाहिए रहता है. तो उसके लिए हम लोग को ग्रेवल कैसे ना कैसे करके माइन करना है. उसने जो अपना पहला ग्रेवल माइन किया बड़ी ट्रेजर के लिए उसमें से उसको फ्लिंट मिल गया. Fantastic loot from the chest. with And look at 11 that, उसको iron, भर-भर के 5 iron मिला. gold, and 4 Diamond भी. diamonds being enough for some high TNT तक मिला some उसको. cooked fish for food, and some TNT saving him a good chunk of time when Okay, वो collecting TNT wood. यूज कर रहा In है. No Fear's देखा previous उसने world पेड़ तोड़ा record, उससे. the chest Drip crafts a diamond shovel and pick, an iron axe, a bucket, a boat, and doors. Oh, The okay, कुछ crafting ज़्यादा ही isn't fast नहीं है ये सब. perfect. There's probably about a second lost just due वो to बोल रहा items that perfect have been नहीं है. dragged and clicked quite मेरे as हिसाब से precisely perfect as था, they but ठीक है. could, but he's still on great pace. And because he already has all his building blocks, he's और वो ready to door ये start सब looking सांस for a लेने के लिए place to build the underwater. portal 45 seconds into the run. About 10 seconds faster than No Fear. The beach is next to a deep तो ocean. देख रहे हो तुम लोग 50 सेकंड में उसने सब कुछ कर लिया. उसके पास आयरन है रेडी है सब. इसको मारने के लिए क्या बोलता है ड्रैगन को मारने के लिए. अब इसको सिर्फ नेदर पोर्टल Magma बनाना है. ravines are common. One of these ravines is visible from shore, so Drip begins boating towards it. He'll look for magma blocks, which ये can देखो. have lava under them, and use his bucket तुम लोग को ना सिर्फ ऐसा ढूंढने का है. और अगर एल जैसा तुम लोग को मिल जाए ना तो तुम लोग के लिए बेटर है. एकदम अच्छा है. and doors to help him build the portal. He has to settle for a 1x2 Whoa, whoa, magma piece whoa. with lava only one Look block at deep that below the speed, surface, dude. which is a slower and more difficult portal to build than runners often get. But Drip's portal building is तो बेसिकली तुम लोगों ने जो मैग्मा का डिजाइन देखा इसका सिर्फ एक सिंपल 2-3 ब्लॉक एक साथ था. तो उसमें पोर्टल बनाना मुश्किल होता है. और जो एल वाला डिजाइन रहता है उसमें इजी रहता है. तो वो बोल रहा है मुश्किल था बट फिर भी super उसका fast हैबिट and इतना था कि pretty इतना much फटाफट कर लिया flawless, उसने. and he's into the nether at about a minute and 18 seconds. कोई और लैंग्वेज है He's भाई. now on a pace 21 seconds faster than No Fear's nether entry, but 10 seconds slower than Xylonox's pace in his former world record. तो वो बोलना चाह रहे हैं कि ज़ाइलोनॉक्स जो था मतलब 3rd नंबर पे जो बंदा था वो 1st नंबर वाले बंदे से जल्दी नेदर एंट्री किया था. तो कैसे कोप अप करेगा वो टाइम को Just a देखते हैं हम minute लोग. in. Of course, there's a lot of steps between here and killing the dragon, and a lot that can go right or wrong. It'll all come down to what the game gives Drip and what he's able to do with it. Entering the nether, Drip spawns right next to a treasure Whoa, bastion, and with तुमने some देखा fast speed bridging वो जस्ट बैशन के नजदीक स्पॉन हुआ. across a lava lake and into the bastion just a few seconds later. और उसको gold Treasure दिख भी रहा bastions इधर are से made up of भर-भर two के. parts. There's the lower section to the left as he enters,
the Okay. upper section on the opposite side of the lava pools. Of the two sections, the upper one is optimal for piglin trading because its तुम लोगों को नहीं पता, यही हम लोग का भी बैशन था, मतलब gold बैशन के बहुत सारे distribution टाइप्स होते हैं, layout ये are वाला much more बैशन अपना ही है convenient शायद। than in the lower section, which is much larger and arranged around a giant pit of lava instead of a ओ, वो single इधर नहीं easily गया इसका navigable मतलब। route. Drip enters the upper section and mines gold blocks as he goes along a pre-planned route, aggravating piglins along the way and funneling them into a single ये वाला area सबसे to स्कैरी पार्ट है मेरे लिए। The gold blocks he finds in the walls all spawn in set points. तुम लोगों को नोटिस किया, वो जिधर भी माइन कर रहा है उधर गोल्ड है, उसका मतलब उसको एग्जैक्ट पता है कि किधर बैशन में किधर गोल्ड होना चाहिए। Each block has a 70% chance of generating, and Oh, Drip gets okay, अभी just 6 समझा। out of 10 of these gold blocks. He digs down for an मस्त रे extra पर block भी। that runners won't always go for to compensate. By the time he's done collecting and distributing the gold, Drip's piglins are almost done trading through it, Whoa, which means whoa, he won't get to whoa। overlap trading time. क्या कितना कुछ मिला With उसको, looting the chests. 11 ऑब्सीडियन अभी से ही मिल गया सेकंड पोर्टल बनाने के लिए, वापस ओवरवर्ल्ड जाने के लिए, और एंडर पोल भी मिल Are गया good उसको though, 16। as he gets all the pearls he needs, What? plus over a full stack 16 प्लस 13 को ज्यादा ही नहीं मिला है, of string. और स्ट्रिंग भी मिला, स्ट्रिंग से बेड बना सकते Which he हैं, can use वुल to बना make के, gold to बेस्ट है। craft beds. Even better, he gets 11 of the 20 obsidian he wants from trades alone, which is 20 really lucky. ऑब्सीडियन, All that's left to do अच्छा is हाँ हाँ, तुम लोग को समझ में आएगा 20 क्यों चाहिए, 2 पोर्टल बनाना पड़ता है, I'll explain बाद में। head down to the chest rooms and hope for 9 more obsidian. But on the way down, अभी he उसको अपने को- pauses as he spots something just as important. The Nether Fortress. From the chests, he gets लेफ्ट में नेदर फोर्ट, मैं अंधा हूँ फिर, मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखा नेदर फोर्ट्रेस, तो लेफ्ट में It's नेदर exactly फोर्ट्रेस what था he's इसका looking मतलब, for, and he's ready to pearl towards the Nether उसको चेस्ट में और मिल गया ऑब्सीडियन, Fortress. ग्रेट। He's out of the bastion at 3 minutes and 9 seconds. 3 which is मिनट हो almost गया a उसका। minute faster than No Fear's pace from his record, although it's actually slightly slower than Xylonox's pace was at this point in his run. Drip pearls halfway to the तो वो fortress, preemptively सेकंड वाले से अच्छा कर रहा है बट थर्ड वाले से बुरा कर रहा है, तो drinks थर्ड a वाले ने potion क्या of fire मिस्टेक किया? resistance, then throws another pearl towards the side Whoa, of the whoa, fortress, whoa. intending to block clutch as the pearl hits the wall. He slightly mistimes the sprint and jump of his 2 pearl सेकंड नहीं, throw, लावा में नहीं and गिरना। lands lower than he intended to, ending up in the lava. This अभी? loses several seconds, although वही, it's अभी not चढ़ना as पड़ेगा bad उसको as पूरा। it would have been if he didn't have Okay, extra पलता, pearls पलता। to get back up the मस्त fortress. रे, उसके पास कितना It's ज्यादा also पल्स था, not तुम as लोगों को भी bad याद as है। if Drip hadn't drunk his fire resistance potion beforehand, which is just one example of the many दिमाग tiny है। precautions speedrunners take. कुछ ज्यादा ही अच्छा प्रिकॉशन था He's उल्टा। into the fortress at मेरे को खुद पे भरोसा नहीं, मैं भी 3:32, करता। where he's immediately greeted by 4 blazes, with each blaze having a 50% chance of dropping a rod. Going 0 for his कोई first drop ही 3 नहीं कर is रहा है। less than optimal, although the 4th blaze does give him his first ओ, rod. पर- He runs to a 4 nearby मारने के spawn, बाद? killing another stray blaze on the way and getting a rod, and then getting a 3rd rod from the blaze that's already waiting at the spawn. ओके, Now he can use the second piece of TNT from earlier to blow up the area around the TNT blaze क्यों चाहिए? spawner, increasing the odds that more blazes will appear each time the spawner activates. In the process, 2 more blazes spawn, each of them dropping a मस्त। rod, bringing तो Drip इसका मतलब और from blazes over spawn होगा वो 3 TNT की to वजह से a much बस। nicer 5 for 8. Ideally, he still wants ओके one ओके ओके, more अभी मैं तुम लोग को समझाता हूँ। अभी हम लोग का स्पीड रन में क्या है, जितना मुझे याद है, अभी वो ओवरवर्ल्ड में जाएगा, वो आई ऑफ एंडर फेंकेगा और चेक करेगा कि एंड पोर्टल कहाँ है। वो एक लीगल सिस्टम यूज करेगा, मैं तुम लोग को बताता हूँ, blaze लीगल rod. सॉफ्टवेयर। But with no blazes to fight for the moment, he can return to the overworld and use the Eyes of Ender he can already craft to locate the strong. He uses a boat to quickly position himself ओ, on a उसने बना precise दिया part जल्दी of the से block, Eye of throws Ender, an Eye of उसने Ender, फेंका। then minimizes his field of view and sensitivity so he can perfectly उसने सेंसिटिविटी और फील्ड ऑफ व्यू दोनों को एकदम कम कर लिया, align और वो ये एंडर पर्ल के तुम लोग को एज दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला एज, the वो उधर right अपना edge of क्रॉस his हेयर रखेगा, ये crosshair देखो। with the हाँ, अभी ये लेफ्ट साइड में तुम लोग को नीचे सिस्टम दिख रहा है कुछ, तो ये चैट भी है उसका और सिस्टम मैच्ड अप है, मतलब उधर 100% दिख रहा है, तुम लोग को वो edge of the समझाएगा आई eye's गेस। pupil. By copying his coordinates in the exact angle he's facing from this position, he can use a calculator created by the speedrunner Ninja Brain to get potential locations of the stronghold and the odds that they are तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी भी 100% लिखा है इधर। 100% क्यों लिखा है there. वो तुम A लोग को lot of the समझेगा। time, one eye throw isn't enough to know for sure where देखा तुम लोग ने, नॉर्मली एक आई थ्रो से नहीं होता है। आई एक्सप्लेन, तो मैं पेंट में तुम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा वियर्ड है। तुम लोग समझ लो ये टॉप पर्सपेक्टिव है, हम लोग एकदम ऊपर से देख रहे हैं वर्ल्ड को, तो समझ लो ये हम लोग का पोर्टल है ऊपर से, राइट। हम लोग बाहर आए और मैं खुद को रेड से दिखा रहा हूँ कि मैं पहले इधर खड़ा था, अभी मैं पहले इधर खड़ा था, मैंने क्या फेंका, आई ऑफ एंडर फेंका। आई ऑफ एंडर उड़ के किधर तो जाता है, राइट, तो वो समझ लो उड़ के इधर गया, परफेक्ट। बट जब मैं एक बार थ्रो करता हूँ मुझे पता चल जाता है वो ये वाले डायरेक्शन में, बट मैं 100% श्योर नहीं होता हूँ कि वो एग्जैक्ट किधर है पोर्टल। बट यूजुअली स्पीड रनर्स क्या करते हैं, वो लोग सिंपली और 10 ब्लॉक तक इधर जाते हैं। सचो में 10 ब्लॉक चले गया, ओके इमेजिन करो तुम लोग बस। आई नो तुम लोग के लिए ड्राइंग थोड़ा वियर्ड होगा, बट तुम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं रेड से प्लेयर को वापस मार्क कर देता हूँ, इसका मतलब वो पोर्टल से आया, उसने एक आई ऑफ एंडर फेंका, वो लेफ्ट एकदम आई ऑफ एंडर के लेफ्ट में देखा, उसको कुछ तो प्रोबेबिलिटी मिला और एक कोऑर्डिनेट मिला। नाउ
वो इधर आया, अभी उसको किधर दिखा रहेगा मैं तुम लोग को बताता हूँ। सो दिस वाज द फर्स्ट रे जो उसने फेंका, 10 ब्लॉक दूर आया। द सेकंड रे एक्चुअली पता है क्या होता है, सेकंड रे ऐसा जाता है, अभी वो ऐसा जाएगा ना किधर तो मीट होएगा, राइट। जब तुम लोग 2 फेंकते हो और वो मीट होता है, ये वाले पॉइंट पे ज्यादा करके होता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। जब तुम लोग 2 फेंकते हो तब उसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट आई गेस ज़ाइलोनॉक्स ने सिर्फ एक फेंका और उसको वो सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि 100% ही गॉट इट। आर यू सीरियस? मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं पेंट में तुम लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो। In which case, runners throw a second eye, losing Second some eye. time Okay. and risking the 20% chance that the eye breaks. This time, though, the calculator tells him with 100% certainty. वही बोला मैंने, 100% दिखाया उसको, तू उधर ही जा। किधर रहेगा, ये वाला है क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट है कि ये वाला है, पता नहीं, वो बताएगा आई गेस। 800 ब्लॉक दूर है बस, तो इसका मतलब नेदर में उसको सिर्फ 100 ब्लॉक्स दूर जाना If है। he gets optimal terrain when traveling those 100 blocks, he could be into the stronghold historically quickly. Without missing a beat, Drip stays locked in and gets back into the Nether at 4:53. He quickly Okay, वो kills the Nether आ one गया blaze वापस। waiting for him, which drops a 6th consecutive rod, then immediately pearls उसने एक in और the rod direction drop he किया। needs to travel. He lands on a nice flat landmass. Perfect. He needs just a little bit of speed bridging to get to the precise अभी तुम लोग coordinates टाइम देखो, अभी भी 5 मिनट हो रहा है और उसने एग्जैक्ट पोजीशन पे बिल्ड करना चालू where कर he दिया है। lands his final portal. He lights it, and all of a sudden, No way. he's into the stronghold at 5 minutes and 22 seconds. Paanch- Not only has he pulled about 20 seconds ahead of Xylonox's pace, not only is he now 50 seconds ahead of No Fear's world record, माँ but कसम Drip अभी दोनों से is फास्ट हो now गया in वो। the stronghold faster than anyone has ever been. The chat that was practically empty at the beginning of the run is now bursting with anxious नो वे, viewers who are पर well लोगों को aware बस कैसे पता चला? जब वो स्ट्रीम कर रहा था तब उसको कोई नहीं देख रहा था, बट जैसे ही वो स्पीड रनिंग में इतना अच्छा करने लगा तब लोग आके उसके चैट में उसको मोटिवेट करने लगे। That's a lot of pressure, but there's no time for Drip to process. प्रेशर any तो of बहुत that. होगा, This ऑफ may कोर्स, be the fastest pace ever, but 110%। He's still got just 2 minutes left to find the end portal, enter the end, kill the dragon, and get into the Okay. exit portal to beat the game. For Drip 120, it's now or never. Into the stronghold, he first pulls up the pie chart and looks for the portal room the same way he found the buried treasure earlier. Since the silverfish Okay, spawner in portal the room भी हम लोग को pie is chart से also समझ में आ जाता है। blocked. He sees that it's in this general direction, and despite some scuffed generation, he finds the portal room pretty much immediately. Now उसने जो सीधा गया लेफ्ट में गया उसको he पोर्टल just दिख गया। has to fill the वाओ, end portal. But he makes a deceptively important omission here as well. Some runners would stop here to craft their explosives and set up their hotbar before entering the end in order to prepare for हाँ the बैठ zero से सब, राइट। one of 2 ways speedrunners can kill the dragon nowadays. The zero cycle involves immediately pearling onto the obsidian tower that the dragon is circling right when the runner enters the end, building up off of ये the क्या है? tower to a predetermined spot, then blowing up explosives to kill the dragon as it repeatedly flies by that spot. Depending on end generation and dragon positioning, Okay. the zero cycle can have varying levels of difficulty or just not be possible at all. But if it is, runners jump at the chance, since it's both faster than a one cycle at its fastest and वन much साइकिल में तुम लोग एक्सप्लेन करता हूँ, और वो जीरो साइकिल जो भी more बता रहा है वो ये consistently है। fast than a one cycle. उन्होंने जो ये बेड प्लेस करने वाला टेक्निक देखा है, बेसिकली ये बेड प्लेस कहाँ करते हैं, एकदम सेंटर में करते हैं एंड के। बट तुम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं बिकॉज ये ग्लिच स्पॉट है आई गेस, वो बार बार वहां पे आते रहता है, बट ये बहुत But कम you चांस can है उधर only आने do का। a zero cycle if you're fully prepared before you enter the end. Drip, in the Okay, वो heat of the center में moment गिरा। and trying not to break his focus, heads straight into the end portal and fills it up. The downside, he'll have to rely on the one cycle to kill the dragon. The upside, he just entered the end at 5 minutes and 44 seconds. The fastest अभी भी 1 मिनट बाकी है। anyone has ever done it. He's 30 और तुम लोग को याद रखना है, अगर एंडर ड्रैगन ने एक बार पर्च किया, ही इज डेड। Then Drip can't ओ, expect वो to सेकंड happen. वाले से As 50 the सेकंड chat is आगे है। making clear, this pace is ludicrously fast. But now, the only thing that matters is how Okay. fast the dragon perches. As Drip runs to the middle of the 1 island, to मिनट लगेगा prepare, I guess he उसको। knows his shot at history is down to chance at this point. But remember, the beauty of Minecraft RSG is that anyone who puts in the time and resources can have a shot. And Drip's certainly done that much. With millions of resets behind him, countless hours playing runs and practicing form and learning techniques, Drip has been preparing for this moment for a very long time. And when, after 20 tense seconds of waiting, the dragon blesses Drip तुम लोग देख रहे हो 640 या फिर 650 है उसका रियल टाइम, और एक्चुअली इन गेम टाइम भी है। इन गेम टाइम आई गेस नीचे वाला है, 6 मिनट 30 सेकंड के with अंदर a वो आ very भी गया। fast perch. He and everyone watching know that all that time, चैट को देखो, all that पोस्ट effort, पोस्ट पोस्ट स्पैम करने all the लगे। great runs Whoa, in whoa, whoa, Minecraft whoa, whoa. history that came before this one. They've all come down. ओके,
ये वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोग को, ये वाला आई गेस वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। तुम लोग ये एंडर ड्रैगन देख रहे हो और उसके हिट बॉक्सेस देख रहे हो। ये वाला जो हिट बॉक्स है, जैसे ही वो अपना सर घुमा के हेड बॉक्स बेड के इधर सामने लाएगा, अपने को राइट क्लिक करना है। अभी देखो सर, राइट क्लिक किया और अभी मैं तुम लोग को बताता नहीं रहूंगा, आई गेस एंड ही है, बट तुम लोग को समझ गया रहेगा। 6 मिनट 50 में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, जस्ट वो नीचे का लाइट अप होने के लिए 7 मिनट 1 सेकंड लगेगा। चैट को देखो, मां कसम 7 मिनट 1 सेकंड। इन गेम टाइम देखो तुम, रियल लाइफ का टाइम मत देखो, वो सेटिंग्स में इधर उधर जाने में टाइम लग जाता है। माय गुडनेस। 7 minutes and 1 second. A new record by 23 seconds, and very nearly shattering the 7-minute barrier on only the 5th run to ever surpass the 8-minute mark. My goodness. All world records are special because they're world records, but this one is truly one that we will never forget. And if not because of the run itself, there's अभी also तुम लोग plenty सिर्फ of ये सोचो कि नेक्स्ट स्पीड रन कब होगा। controversy surrounding the circumstances of the run, and particularly the fact that the speedrun.com team rejected it. ओके, speedrun.com एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम लोग अपना ऑफिशियल स्पीड रन रजिस्टर कर सकते हो और फिर तुम लोग को उधर दिखाएगा वो कि तुम लोग ने इतने इतने मिनट में बीट कर दिया। पर जब तुम लोग नंबर 1 रहते हो, थोड़ी स्क्रूटिनी या फिर चेकिंग ज्यादा होती है, तो इसके उसमें पता चल गया वो एक एक्स्ट्रा मॉड यूज कर रहा था, बट ये मॉड शायद वो लीगल नहीं था। तुम लोग को समझाएगा, The official leaderboard. मतलब रूल बुक में You नहीं था। see, in Minecraft speedrunning, mods are obviously not allowed in official runs, unless the speedrun.com moderating team makes an explicit exception. There are plenty of these exceptions, most of which are mods that simply improve the performance of the game, making Sodium ये सब speedrunning more जैसा। accessible to those उससे with less performance अच्छा हो powerful जाता है, Optifine ये computers. सब। Another exception is World Preview, which we saw Drip using at the beginning of the run. But the mod was in fact totally harmless. It was a mod that works with World Preview to prevent occasional crashes that the mod can cause on lower performance computers. It doesn't affect anything speedrun.com ने Drip120 के स्पीडरन को रिमूव कर दिया जस्ट बिकॉज वो एक मॉड यूज कर रहा था जो उसका गेम प्रिवेंट कर रहा था खुद से ही बंद होने के लिए। उन्होंने सीरियसली इसको रिजेक्ट कर दिया स्पीडरन को, बट अभी तक आई गेस वो ऑफिशियल नहीं हुआ इसका मतलब speedrun.com पे। बट हम लोग तो मानते हैं कि वो एक अच्छा स्पीडरन था जस्ट बिकॉज एक मॉड है जो क्या बोलते हैं क्रैशिंग को फिक्स कर देता है। I don't think so it is cheating. So, when the mod team stood by their rules and rejected Drip's run from the official leaderboard, people were understandably upset. This run obviously course, wasn't upset cheated. रहेंगे। Who cares if he was using a mod to stop his game from crashing? And while the mods said as much in their statement, saying they rejected the run because several other world record runs have been unverifiable for the same reason, वो लोग बताना चाह रहे हैं कि ये वाला मॉड या फिर ऐसे मॉड्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इसलिए वो हर एक बंदों का रिजेक्ट कर देते हैं जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। बट उन लोग आई गेस ये स्पेशल केस समझ के रखना चाहिए बिकॉज ये एक्चुअली नंबर 1 का क्या बोलते हैं स्पीड रन का रिकॉर्ड है, नंबर 10 का नहीं है, नंबर 11 का नहीं है, नंबर 1 का है। despite being legitimate. And there are ongoing conversations within the mod team about potentially revising this decision and allowing the run to be on the official leaderboard. What do you think? होपफुली ऑफिशियल लीडर बोर्ड पे आ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट वीडियो। आई विल रिपीट, तुम लोग को दोनों का भी चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। Drip120 ने हिस्ट्री बना दिया माइनक्राफ्ट में बाय बीटिंग माइनक्राफ्ट एट जस्ट 7 मिनट्स एंड 1 सेकंड। क्या तुम लोग चाहते हो मैं 7 मिनट में बीट करूं, व्हिच इज इम्पॉसिबल, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तुम लोगों को मैं मोटिवेट क्यों कर रहा हूं? अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग चाहते हो मैं स्पीड रनिंग सीखूं तो तुम लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा शुड आई स्पीड रन और नॉट, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।